So 12th class, good afternoon, everybody. In this class, I'll be discussing about the project. Practical file you all have submitted. I am to discuss the project now so that you can work upon it in this week, and next week you can submit your project reports. This is the sample project. You understand it? I will send this project in the group for your guidance. Okay, so that you get to know what exactly you have to do. Clear? सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप है, you are to give the title of the project. The first comment will be your title of the project. Okay. Then import the MySQL connector. Clear? And your first function will be to create the database. आपका पहला जो मॉड्यूल होगा, जो पहला फंक्शन होगा, that will be to create the database. Now, taking the connect function of MySQL connector, you are to get connected with the server. These are the three important parameters which are the parameters of connect function. Host, the name is localhost, user, root, password, empty string. Okay. Then there is one inbuilt function is connected. Is connected function is used with the connection object. ये देखो मैंने connection object बनाया. You can make with any name. I have taken the name CONN. You can take any name you want. Clear? I have taken the name CONN. This is the name of connection object. I write the comment here. CON is the connection object. Then using the connection object, check out whether you are successfully connected with the server or not. MySQL server से आप connect हो चुके हैं कि नहीं? So this function if true, this function if evaluate to true, it will print the message yes, successfully connected. Then the most important part is to create the cursor object. You will create table, you will insert records in the table, you will put queries onto the table to retrieve the selected or desired records. आप सारे के सारे रिकॉर्ड चाहते हैं? You want some selected record or you want only one record? That is up to you. So in order to put queries on the table, you need to have a cursor object. Cursor object is created by taking the connection object along with the cursor function. This C is the cursor object. You can take any name you want. C is the cursor object. Such comments you can give in your project in order to make your statements clear to the examiner. Short comments you can take, short meaningful comments. So I have given this command, cursor object dot execute function. Whatever command you want to put on the database, whatever command you want to put on the table, if you want to run that command, the function is execute. Execute function always associated with the cursor object.
जैसे आप माई एसक्यूएल ओपन करते हो और सबसे पहले कमांड देते हो क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस का नाम, बिल्कुल वैसे ही कमांड बनानी है, उसको डबल कोट्स में एनक्लोज कर लेना है। ओके, अब आपका डाटाबेस बन चुका है। अगर आप मल्टीपल टाइम प्रोजेक्ट को रन करने की कोशिश करोगे, पाइथन विल गिव एरर दैट डाटाबेस विद दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। वंस योर डाटाबेस इज क्रिएटेड, इस कमांड को कमेंट बना देना, ताकि मल्टीपल टाइम जब टेबल रन हो, बार बार वो डाटाबेस ना क्रिएट करे, डाटाबेस एक ही बार क्रिएट होगा। So once you create your database, make this command as comment. Okay, am I clear? Then print the message successfully connected with the database. ये आपका हो गया database create function। ये सभी प्रोजेक्ट में सेम होगा, सिर्फ डाटाबेस का नाम चेंज हो जाएगा। That depends upon the project, whichever project you have taken. Then in the second function, we are to create the table under this database. Okay, जैसे ये देखो, मैं आपको MySQL में दिखा रहा हूं, ये मैं कनेक्ट हो गया, मेरा डाटाबेस बन चुका है, और आई एम गेट कनेक्टेड विद द डाटाबेस। नाउ आई विल शो टेबल्स इन दिस डाटाबेस। ये देखो, इस डाटाबेस के अंदर मेरा एक टेबल क्रिएट हो चुका है। आई कैन शो द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल टू यू। I can show the structure of table to you. This table I have created under this database school1. Don't just take 5 or 6 fields. ये मैंने सिर्फ एक सैंपल प्रोजेक्ट बनाया है। You have to take multiple fields depending upon the project you have taken, and take only the relevant fields. Don't take any unwanted, undesired fields. Okay? And when you will create your project, parallel MySQL खोल के रखना है, ताकि दोनों तरफ आपका इंटरेक्शन चलता रहे। So this is the table. Create the connection object, create the cursor object, जैसा मैंने पहले बताया आपको अभी। ठीक है, अब यहां पर क्या चेंज आएगा? Database you have created. Now you will take fourth parameter here, database equal to school1. ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि ये वाला जो टेबल है वो इस डाटाबेस के अंदर बनाया है। Once you have created the database, make it a comment and then take the fourth parameter in the connect function database and give the name of database, whichever name you have taken. Okay, clear? Then table. The way you create table in MySQL, same command you have to give here. Create table, table का नाम, opening bracket, field का नाम, student का नाम, character, जो भी field चाहिए सारी field ले लो, and close the triple quotes. अगर आप मल्टीपल लाइन में टाइप कर रहे हो पाइथन में, यू हैव टू स्टार्ट विद ट्रिपल कोट्स। +1 के बेसिक्स याद है ना? अगर मल्टीपल लाइन में टाइपिंग कर रहे हो तो यू हैव टू गो विद द ट्रिपल कोट्स। जैसे आपका प्रोजेक्ट है बिलिंग सिस्टम, तो बिलिंग के रिगार्डिंग आपको चाहिए आइटम कोड, आइटम प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट, टोटल प्राइस, डिस्काउंट, डेट ऑफ परचेज, बिल इनवॉइस नंबर, कस्टमर इनवॉइस नंबर, जो भी आपको डिजायर्ड फील्ड चाहिए वो सारी आप लोगे। फिर आपको प्राइमरी की भी बनानी है एक, यहां मैंने प्राइमरी की नहीं बनाई, आपको प्राइमरी की भी बनानी है। जैसे यहां पे रोल नंबर मेरा प्राइमरी की बन जाएगा।
Clear to everyone what I want to say, you guys? All right. So because you are creating the table first time, you will execute this. ये सारी क्वेरी को, ये क्वेरी बना के जब जब आप MySQL की क्वेरी बनाओगे पूरे प्रोजेक्ट में, इन द कंप्लीट प्रोजेक्ट, whenever you will make the query, assign the query to some variable. Whenever you will make some query, assign the query to some variable and put that variable as a parameter inside the execute function. Okay? Clear? Am I clear up till here, all of you? In the complete project, whenever you will make SQL queries like this, कोई भी ऐसे क्वेरी बनाओगे आप, उस क्वेरी को किसी वेरिएबल में डाल देना, उस वेरिएबल को एग्जीक्यूट फंक्शन में डाल देना, राइट? Then print the message table created successfully. Once your table is created, make this command as comment. Otherwise, if you will run it, Python will give error. I just show you one example here. ये देखो, my table is ready, my database is connected. ये this is the title of my project. ये मेरा पहला आउटपुट है. Is it visible to all? Sorry. Now see one thing. If I don't make it query, if I don't make it query, comment, मैं इसे कमेंट नहीं बना रहा, देखना पाइथन क्या करता. Python will give error. Table already exists. Why you are creating same table again? To avoid this output, to avoid this problem, make your executable command as a comment. ठीक है? Especially in the database and in the table. ठीक है जी? Any doubt up till here? Are these two functions clear? +2, give your response. Next week आपके प्रोजेक्ट की सबमिशन शुरू हो जानी है. All of you please give the response. Only Anushka and Abhishek are in the class. Mohit, Sukhmani, Jatin. All right. Then the third function, to insert the records. मैं यहां पर भी एक कमेंट देना चाहूंगा. To create the table. Okay. Function to insert records in the table. Okay. Now table is created. Now you want to insert records in the table. So for that, what I am going to do is, I have taken the function insert record. You can take any function name. हर एक चीज का फंक्शन बना दो और फंक्शन को कॉल करते रहो, प्रोजेक्ट अपने आप बन जाएगा तुम्हारा. ओके. Again, I created the cursor object, connection object, then cursor object. Now I have taken a variable ch whose initial value is y. Y means yes. While, take the while loop till the value of ch is y. जब तक ch की वैल्यू लोअर केस का y है, आप यहां पे अपर केस भी चेक कर सकते हो. You can go with upper case also, that is your choice. Whatever field you have taken, input those fields from the keyboard. Input all the fields from the keyboard depending upon the data type. Roll number is of type integer. ये देखो roll number की command. Name is of type string.
सीधा इनपुट फंक्शन, because whatever you input via input function, it is of type string. Then class again of type string, class को भी input करवा लिया. Father name string, father name input करा लिया. Mobile number big integer means integer, तो मोबाइल नंबर पर मैंने इंटीजर फंक्शन ले लिया. फीस इज ऑफ टाइप फ्लोट, तो फीस पर मैंने फ्लोट फंक्शन ले लिया. और ये वेरिएबल्स बना लो. You can make these variables, any variables you can take. Now create a MySQL query. आप जब MySQL में थे आप ये काम करते थे. Insert into stu data values 1, Aditya, then I have class 11th, then I have एक मिनट, नेक्स्ट फील्ड क्या है? फादर नेम हेमंत, देन नेक्स्ट फील्ड है मेरी मोबाइल नंबर 3434 मोबाइल नंबर, एंड फीस आई एम टेकिंग 500. ठीक है, वही चीज मैंने यहां पे की है. Insert into table name values. You are not to pass direct values but %s format string. %s is a format string that will be replaced by value of tuple. Values given in tuple. कितने आपके फील्ड हैं? 1 2 3 4 5 6. टेक 6 times %s. Okay, now create tuple of these, all the variable which you have inputted from the keyboard. Make a tuple of those. Make a tuple of those. Once you have make a tuple, this is your MySQL query, this is your tuple. Both the parameters pass in the execute function. जिन्हें ये क्लियर हो गया जल्दी थंब रेस करो. It will remain same for all the projects. This is your MySQL query. ये वाली क्वेरी जो आप करते हो क्रिएट. सिर्फ यहां पे अब वैल्यूज नहीं लिखनी. इंस्टेड ऑफ वैल्यूज यू आर टू राइट %s लाइक दिस. ठीक है, एम आई क्लियर? देन क्रिएट अ टपल ऑफ द वैल्यूज. ईच वैल्यू ऑफ टपल, ईच वेरिएबल इन द टपल will be replaced here. First %s roll number, second %s name, third %s class, fourth %s father name, fifth %s mobile number, last %s fees. Then give a name to your tuple, give a name to your query. दोनों नाम एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास कर दो. Whenever you will insert the record in the table, you have to save that command. You have to save that command by using commit function, so that table accept changes. Commit function is very important after insert, after delete, after update. Commit function is always used with the connection object, not with the cursor object. Okay? Then this variable row count. रो काउंट एक इनबिल्ट वेरिएबल है
जैसे जैसे आप रिकॉर्ड इनपुट करते हो, रिकॉर्ड रिट्रीव करते हो, ये वेरिएबल अपने आप इंक्रीमेंट होता रहता है. ओके, whenever you will insert one record, this variable will show the counting. One record inserted, one record retrieved, two records retrieved, like this. And this variable is used with the cursor object. Commit function is used with the connection object. Row count variable is used with the cursor object. So one, ये इसका आंसर आएगा one record inserted in the table. Then ask the user whether you want to insert more record, yes or no, why, or apart from y any other key. If user say n, a, b, c, d, वो यहां पे मैच नहीं किया, y के साथ मैचिंग नहीं हुई, it will close down. If you will press y, it will ask for the another record. I just run this code. Enter your choice. I say 1. I want to insert the record. Roll number 1, name Aditya, class 11th, father's name Hemant, uh, 79864, fees 5000. ये देखो, one record inserted. Do you want to insert more record? Yes. Either press Y in lower, either upper. तो ये आपसे multiple record पूछ लेगा. If you enter any other character apart from Y, it will not accept the record. Yes, I want to enter one more record. Roll number 2, name Maulik, class 12th. मौलिक, चलो सतीश, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं ये, ठीक है. मोबाइल नंबर 56789, फीस 4500. यू वांट टू इंसर्ट एनी रिकॉर्ड? नो. वांट टू रन अगेन? यस. दोबारा रन करना है प्रोजेक्ट? यस. डिस्प्ले द रिकॉर्ड. ये देखो मेरे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए. मैंने सुबह आदित्य नाम से पहले भी एक रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है, इसलिए वो 2 आदित्य आ रहे हैं. नाउ हियर यू कैन चेक दिस कमांड, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टू डाटा. वो देखो, ठीक है, क्लियर है. Whatever you do in Python, parallel effect you will see in MySQL. Am I clear to all? Am I clear? Any doubt?